Hello dears, welcome back. Today we are going to study case number 12 of noun. That is the last case of noun. In this case we are going to study how to use apostrophes and only apostrophe. So let's get started. Stay tuned and subscribe to the channel if you haven't. Right, let's continue. This is called possessive or genitive case of noun. Possessive mean which shows possession, right? And genitive mean which shows gender or which is related to gender, right? So possessive or genitive case, it's all about showing possession, relationship, authorship or ownership, right? In this case, a noun is used, look at the definition. A noun is used with apostrophes or only apostrophe to show possession, ownership, relationship or authorship, right? In Urdu, I would like to say, इस केस में हम apostrophes को या only apostrophe को noun के साथ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम या तो possession, ownership या relationship या authorship के बारे में हम कुछ बता रहे हैं. So in this case, इसी केस में हम noun को apostrophes के साथ या सिर्फ apostrophe के साथ इस्तेमाल करते हैं ताकि हम possession मुल्कियत को, ऑनरशिप ये भी मुल्कियत को या रिलेशनशिप रिश्तेदारी को या ऑथरशिप तसनीफ़ को हम ज़ाहिर करें. यानी हमारी फोकस जो है वो नाउन, एक नाउन की दूसरे नाउन के साथ जो ताल्लुक़ होता है उसको ज़ाहिर करना होता है. ठीक है. सो यहाँ पर हमने अपॉस्ट्रोफीस इस्तेमाल करना है या ऑनली अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करना है. ठीक है. दिस सिंबल इज कॉल्ड अपॉस्ट्रोफी, राइट? In English we call it apostrophe, and remember that apostrophe is written not under a letter but above the letter, right? Like I say that D's, so I can't put it here, right? It's a comma, it's not apostrophe. Apostrophe is this one, right? For example, I say Abid's, right? Abid's car. This is apostrophe and this one is comma, right? So remember that apostrophe should be put on the top, not at the bottom, right? So this sign or this symbol is called apostrophe. Now it answers the questions whose. Remember that possessive case of noun answers the question whose. यहाँ पर हमें whose का answer मिलता है, right? For example, I say I bought some books. My friend asks a question, whose books? I say that I bought Kadir's books, right? So now here I give the answer to his question whose, right? He asked me a question whose, right? And I gave him an answer. So यहाँ पर possessive case जो है हम जब भी इसको इस्तेमाल करेंगे ये whose के लिए एक आंसर होगा. whose के साथ जो आंसर हम पूछते हैं ना तो उसके लिए एक आंसर होगा हमारे पास. Now look at the example. This is Hamid's car. हमारे पास यहाँ पर दो nouns है, Hamid and car, right? पहले नाउन के साथ हमने apostrophes इस्तेमाल किया है, right? And then we have another noun. So this use of noun is called possessive or genitive case. इस नाउन को हम क्या कहते हैं? इस केस को possessive case कहते हैं, right? Or genitive case. Possessive or genitive, both names can be named to it. Now we are Wahab's students. Now one thing should be kept in mind. In the first example, this is Hamid's car. So यहाँ पर हम ownership के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. Hamid's car, it means Hamid owns that car, right? He owns that car and he has that car. He possesses that car. So that is an ownership. यहाँ पर हम मुल्कियत के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हामिद, ये कार जो ये हामिद की है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हामिद्स कार. सो यहाँ पर हमने मुल्कियत के बारे में बात की. वी आर वहाब स्टूडेंट्स. नाउ ये स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो रिश्ता है हमने उसी को ज़ाहिर किया किसके ज़रिए? अपॉस्ट्रोफीस के ज़रिए. सो दिस केस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड पोजेसिव केस और जेनेटिव केस. एंड यहाँ पर हमने क्या शो किया? रिलेशनशिप को ज़ाहिर किया. ही सेंट मी इकबाल्स बुक्स. ही सेंट मी बुक्स. ही सेंट मी इकबाल्स बुक्स. तो यहाँ पर अगेन हमने नाउन को अपॉस्ट्रोफीस के साथ इस्तेमाल किया हुआ है और इकबाल जो है हमारे पास नाउन है तो फिर नाउन को हमने पोजेसिव केस में इस्तेमाल किया क्योंकि अपॉस्ट्रोफीस इस्तेमाल हुआ है और ये हमारे साथ क्या शो करता है? ऑथरशिप ज़ाहिर करते हैं. ठीक है. सो जब हमारे पास अपॉस्ट्रोफीस या अपॉस्ट्रोफी, ऑनरशिप, रिलेशनशिप,
ऑथरशिप, यू कैन ऑल्सो से पोजेशन को जाहिर करे, तो उस केस ऑफ नाउन को हम क्या कहेंगे? पोजेसिव केस और जेनेटिव केस ऑफ नाउन। ठीक है, बुक्स हमारे पास नाउन है एंड इकबाल भी नाउन है। पहले नाउन के साथ हमने अपॉस्ट्रोफी एस ऐड किया तो हमारे पास पोजेसिव केस बन गया। ना हमने कहा कि हम ओनली अपॉस्ट्रोफी एस नहीं, अपॉस्ट्रोफी अलोन कैन आल्सो बी यूज्ड, हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, दिस इज अनस हाउस। ना यहाँ पर लास्ट में हमारे पास ऑलरेडी एस मौजूद है, तो इस केस में हमारे पास ज़रूरत नहीं कि हम और एस को भी डाल दें। सो यहाँ पर हमने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी को इस्तेमाल किया। ठीक है, ये हमारे पास हाउस नाउन है, अनस भी एक नाउन है, तो फिर भी जो पोजेशन है, ऑनरशिप है, उसके बारे में हमने बात की। सिर्फ अपॉस्ट्रोफी के ज़रिए हमें पता चला कि घर जो है ये अनस की है, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड पोजेसिव केस ऑफ नाउन। देयरफॉर आई टोल्ड यू दैट it can be shown by either apostrophe s or only apostrophe. So in this case I just put apostrophe. मैंने यहाँ पर सिर्फ apostrophe को इस्तेमाल किया। ठीक है, now let's study types of genitive case. We have two kinds of genitive case, right? The first one is separate genitive case and the second one is joint genitive case. Remember that in separate genitive case we use apostrophe s or apostrophe with all structures. Structures mean nouns, right? With all nouns we will put apostrophe s or only apostrophe. But in joint genitive case the case is vice versa. In this kind of genitive case, apostrophe s or apostrophe is used only with the last structure. Last structure means the last noun, which is used after conjunction. You know, though in separate genitive case यहाँ पर हमने apostrophe s को या सिर्फ apostrophe को तमाम नाउन्स के साथ इस्तेमाल करना है। ठीक है, यानी जो पहली नाउन हमारे पास होता है उसके साथ भी हमने अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करना है, दूसरे के साथ, तीसरे के, हमारे साथ जितने भी नाउन जुमले में इस्तेमाल हुए सब के साथ हमने अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करना है। ठीक है, और जो कंजंक्शन के बाद नाउन या स्ट्रक्चर आता है उसके साथ हमने अपॉस्ट्रोफी लगाना है। एंड जॉइंट जेनेटिव केस में जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर हमने अपॉस्ट्रोफी एस या ओनली अपॉस्ट्रोफी को, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी को लास्ट स्ट्रक्चर के साथ सिर्फ इस्तेमाल करना है, सारे के साथ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लुक इन दिस काइंड ऑफ जेनेटिव केस, इसी किस्म में हमने अपॉस्ट्रोफी या इस अपॉस्ट्रोफी को इस्तेमाल करना है विद द लास्ट स्ट्रक्चर। लास्ट स्ट्रक्चर का मतलब है सिर्फ लास्ट नाउन जो कंजंक्शन के बाद इस्तेमाल होता है। ठीक है, अली, आमिर एंड सईद्स कार्स आर एक्सपेंसिव। लुक एट द डिफरेंस, अलीज, आमिर्स एंड सईद्स कार्स आर एक्सपेंसिव। यहाँ पर हमने अलीज की सेपरेट पोजीशन शो की है, आमिर्स की सेपरेट पोजीशन है और सईद्स की सेपरेट पोजीशन हमने जाहिर की है एग्जांपल्स के जरिए। तो ये सेपरेट पोजेसिव थे, राइट, दैट इज सेपरेट पोजेसिव केस। एंड यहाँ पर अली, देयर इज नो पोजेसिव, देयर इज नो अपॉस्ट्रोफी एस, आमिर नो अपॉस्ट्रोफी एस, एंड आफ्टर कंजंक्शन, कंजंक्शन ये हमारे पास एंड जो है ये कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन के बाद हमने जो नाउन इस्तेमाल किया हुआ है उसके साथ हमने अपॉस्ट्रोफी लगाई है, right? So with joint genitive case it's not important to put apostrophe s or only apostrophe with all of them, but in separate it's important, you must use apostrophe s or apostrophe with all of them, right? That was the difference. I hope you understood, and that won't be so difficult. Now we are going to study the usage of apostrophe s or apostrophe, and also we are going to study the usage of possessive case, right? So we will have two more topics, big topics in this case which are related to it. In the next video we are going to highlight them, so stay tuned and make sure that you watch that video after this video, so you will know a lot about apostrophe s and only apostrophe. Wish you best of luck. See you in the next video.